Good morning, everyone. Hope you all are safe and healthy. I'm sure most of you would have seen the previous video that I had uploaded on Discover Your Real Self, where we had talked about the importance of analytical mind in our lives. So we will start it from there. तो जब हम कनेक्शंस देखते हैं हमारे एनालिटिकल माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में, one thing is very much foreseen. One thing that every one of us can easily observe is that by the time we start growing up, by the time we attain the age of 30 or 35, 95% of our body, 95% of our body knows the things how to do better than our brains. For example, we often hold a coffee mug on a particular hand. कुछ लोग लेफ्टी होते हैं, कुछ लोग राइटी होते हैं. And then if you also observe, people wear watches on a specific hand. Some prefer left, some prefer right. And at the same time, if you look at the sleeping postures, every individual has a different sleeping posture जिसमें उसको ज़्यादा comfortable feel होता है. तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी बॉडी एक सेट रूटीन, एक सेट पैटर्न को फॉलो करने लगती है और इस कदर तक फॉलो करती है कि हमारे ब्रेन को पता भी नहीं होता. And everything happens very much subconsciously. So our mind that we feel is ours, that the body that belongs to us, is somehow holded by some unseen power. आपने गौर किया हो, जब आप कभी ड्राइविंग को अगर ध्यान से देखें, तो जब आप इनिशियली ड्राइविंग सीखते हैं, इन द बिगिनिंग यू टेक टू मच ऑफ कंट्रोल, यू कीप इट इन योर माइंड कि कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, कैसे स्टीयरिंग को संभालना है. योर ओवरऑल फोकस इज ऑन क्लच, ब्रेक एंड स्टीयरिंग. बट ग्रेजुअली व्हेन यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू लर्न ड्राइविंग, फिर आप कुछ काम करते हुए भी, फ़ोन पे बात करते हुए भी ड्राइव करते हुए चले जाते हो, एंड इट इज़ नॉट इन योर हेड, इट इज़ डन सबकॉन्शियसली. So here I mean to say that there are things good, there are things that are and bad as well, done by our subconscious mind, which is our body. तो अब हमें डिसाइड करना है, हमारे एनालिटिकल माइंड को डिसाइड करना है कि इसका परसेंटेज कितना हो, क्योंकि अगर सही दवा सही डोज में ना मिले तो हार्मफुल हो जाती है दोस्तों. So the same ways we need to be very much observant that how much percentage we have given to our subconscious mind. तो अब पिछले सेशन को आगे कनेक्ट करते हुए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी. आई होप आप सभी ने कभी ना कभी ध्यान दिया होगा. क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपको किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से निकलने में बहुत ही कठिनाई, बहुत ही असहजता महसूस होती है? Have you ever dwelled on it seriously, that why do I feel so uncomfortable in overcoming that experience which is in my head, which has a lasting impact? अगर आपने बहुत minutely observe किया होगा, then one thing you will definitely conclude yourself is because of the emotional reaction attached to the particular event. इसको हम ऐसे समझते हैं, किसी भी इंसान के साथ या किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ जो होता है, उसका इमोशनल इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होता चला जाता है. एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि जब वो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा घर कर जाता है, तो हम अगर सोचे भी कि उसको हमें कॉन्शियसली नहीं हावी होने देना है, हम दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, देन ऑल्सो व्हाट हैपेंस, क्योंकि हम उस इवेंट को बार बार रिकॉल कर चुके होते हैं हमारे माइंड में कि ये हमारे साथ कैसे हो सकता है. And at times we do share with people in our surroundings with whom we feel comfortable. हम उनसे बार बार बताते हैं, how could my boss yelled at me so unfairly? How could this happen to me? मैंने तो सब कुछ ठीक किया था, ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझे छोड़कर किसी और को प्रमोशन कैसे दे सकते हैं? मेरा फ्रेंड मेरे बैक स्टैबिंग कैसे कर सकता है? So such kinds of notions, such kinds of experience has very much emotional connect with us, and this emotional connect is known as emotional quotient. So when this emotional quotient gets higher, तो इसका हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है. देन व्हाट द ब्रेन डज,
brain takes a snapshot. And what does snapshot mean? That all of us know. जब भी हम कोई snap लेते हैं, why do we do that? Just to keep it as a memory. चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, हम एक फोटो में उसे कैप्चर करते हैं just to relive the moment. Right? All of us get ourselves clicked at some point of time. So the same ways, when an event takes place in our lives and our brain gets a snapshot of that event, it lasts in our memory for a longer duration. And my dear friends, if a particular event stays in your mind for days, because the brain has taken a snapshot, then it becomes a memory. And if the memory retains in your head for days, it gets converted to a mood. You must have seen people asking you, why are you in a mood? इतना moody क्यों हो तुम? Then if the person feels comfortable to share, the person will say, यार this thing happened to me 5 days ago and I'm still unable to overcome it. यार बीवी से झगड़ा हो गया था, वो मायके चली गई है, 4 दिन हो गए लेकिन दिमाग से निकल नहीं रहा है. That is why my mood is disturbed. My friend borrowed some money and now the friend is playing tricks. It's been 2 days. He said that he'll return the very same day in the evening and he has not yet returned. So that is why I'm disturbed. So this mood is actually in your subconscious mind and it is there for a longer duration. And if you allow it to do that chemical reaction, to do that chemical locha for another days or months, if it gets converted to long days and months, then it becomes a temperament. We often see people asking, why is he so bitter? Why is he so harsh? Oh, I don't know. Maybe let us ask him directly. Okay, so my dear friend, why are you so bitter? God, I can't tell you. It's like this thing happened to me 9 months ago and I'm still not able to overcome it. How could my father did this to me? He gave importance to the younger son and he just neglected me. How could he cheat me? How could he do this to me? How could my wife run away with someone else? So things like that. When such emotional connect with the people in our surroundings is more higher, that emotional quotient is higher for a longer period of time, then this temperament which is there for weeks or months would get converted to years. And my dear friends, if it reaches to years in your head, then it becomes your personality trait. That's the irony. हम कई बार कहते हैं कि उसका तो नेगेटिव ऑरा है, just forget about that person. We don't need to gel with the person because the person has a negative aura. But deep within, even the person doesn't know. Why does he carry that negative aura? Why does he carry that negative personality trait? Or at the same time, if you look at the reverse side, the flip side of it, the person whom you feel is more positive, जिससे मिलके आपको अच्छा लगता है, जो हमेशा अच्छी बातें करता है, ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं हुई होती हैं. The person is actually beyond the analytical mind. He has entered into the operating system because he has somehow practiced the habit of leaving things aside, keeping things aside. No matter what comes to my life, I need to be positive. I need to be optimistic. That person has the hold of things and the person can let go of those emotions which is actually taking him off from the productive things. Now, the real cause, the real work comes to how to lessen or how to shorten this kind of emotional experience on us. How to practice that. Well, my dear friends, I'll just give you a clue which can turn your destiny if you actually observe it minutely. एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी जो आपको पहले से पता है पर शायद आपका ध्यान ना जाता हो इस तरफ. If you carefully observe a child who is, let's say, 2.5 or 3.5 years old, being a parent, when you scold the child to do something good,
आप अपने खिलौने उठा के रखो। And at times, if the child is not studying, वो ABCD नहीं पढ़ रहा, he is not connecting the puzzles. If you scold the child, he'll cry at that very moment. But at the very next moment, when you'll hug the child with passion, the child will immediately forget what went before, what happened before. Whereas we as an adults, we tend to keep those memories in our brain for a longer duration of time. And there is a purpose also. Why do we do that? That you need to discover. I'll disclose it in my next video. Till then, try to lessen up, try to shorten your emotional experience. Because अगर आप उसको पालेंगे, पहले वो एक छोटा सा मेमोरी बनेगा, मेमोरी से वो एक मूड बनेगा, मूड से वो एक टेम्परामेंट बनेगा, और टेम्परामेंट से वो एक पर्सनालिटी ट्रेट बनेगा. सो अगर आप इस जर्नी को कंटिन्यू करते चले जाते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, यू विल एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी. I've got few calls after posting my previous video where people expressed that they are going through severe depression in their lives. तो मेरे प्यारे दोस्तों, दो तीन छोटी सी चीज़ें अगर मैं आपसे पूछूंगी और आप उसका आंसर मुझे मत दीजिए, बट अपने जहन में ज़रूर झांक के देखिए क्या अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, और अगर वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आप डिप्रेशन में हैं. एंड टिल द टाइम यू आर नॉट अवेयर दैट यू आर इनटू डिप्रेशन, यू कैन नॉट ओवरकम इट. पहले तो रिकग्नाइज करना है, फिर उस पर काम करना है. फॉर एग्जाम्पल, अब आजकल कोरोना की वजह से तो हम बहुत सारे लोग हाथ धोते हैं दिन में कई बार. That's a different thing. Just forget about Corona. Things that we used to do before Corona. जो लोग अपने हाथ को कई बार साफ करते हैं दिन में, they are phobic. I don't know why do they do that. If you are doing it, और for example आप अपने ऑफिस से घर जा रहे हैं, आप बार बार अपनी ड्रॉर चेक करते हैं कि उसमें कुछ छूटा तो नहीं. जब आप अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, बार बार चेक करते हैं कि मैंने अपना सारा सामान पर्स रख लिया या नहीं, या घर से बाहर निकलने के बाद याद आता है कि कहीं मैंने मोबाइल छोड़ तो नहीं दिया, जबकि मोबाइल आपकी पॉकेट में होता है. So if such things are happening to you right now, then you are somehow or somewhere in the road of depression, towards the journey of anxiety. So these are the signs that you need to pick up faster. And as soon as you will understand these signs, you will be able to start working on them. So till then, stay happy, stay healthy, and we'll get back to you very soon. Enjoy. Bye.